दोस्तों, आपको मालूम है जॉर्ज सोरस नाम का एक कीड़ा मार्केट में आया हुआ है आजकल। इसके दोनों पैर तो कब्र में हैं, पर इसकी आदतें नहीं सुधर रही हैं। 92 साल का हो गया है, इसकी उम्र हो गई है। वह अपना बचा हुआ समय दान धर्म में लगाए, यही उसके लिए बेहतर होगा, क्योंकि इस बार उसने शेर के मुंह में हाथ डाल दिया है। दोस्तों, ये महाशय हर देश के बारे में अफवाह फैलाते रहते हैं, और जब वहाँ की अर्थव्यवस्था गिरने लगती है तब ये जनाब उस देश के स्टॉक मार्केट में शॉर्ट सेलिंग करके पैसे कमाते हैं। और इस कीड़े के ऊपर जापान और रूस ने भी आरोप लगाया हुआ है। इस बार म्यूनिक सिक्योरिटी काउंसिल में इस कीड़े ने कहा है कि भारत में मुसलमानों के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है। India is an interesting case. It's a democracy, but its leader Narendra Modi is no Democrat. Inciting violence against Muslims was an important factor in his meteoric rise. Modi maintains close relations with both open and closed societies. India is a member of the Quad, which also... और नरेंद्र मोदी के ऊपर भी इसने आरोप लगाया है कि वे गणतंत्र में विश्वास नहीं रखते हैं। ये तो साफ दिखता है कि ये सठिया गया क्योंकि बुढ़ा गया है। भारत में गणतंत्र है और वहाँ का प्रधानमंत्री ही गणतंत्र में विश्वास नहीं रखता। दोस्तों, अगर आपको सही में मुसलमानों के ऊपर अत्याचार देखना है तो अफगानिस्तान और अफ्रीका के और भी मुस्लिम देशों को देखिए। इसके पूर्व भी इसने आरोप लगाया था भारत अपने यहाँ रहने वाले मुसलमानों की नागरिकता खत्म करने वाला है, पर आप सभी जानते हैं यह इसके एक बोंगी मात्र थी। अगर इतना प्रेम है तो यह कीड़ा इस्लाम क्यों नहीं कबूल कर लेता। इसने अपने साक्षात्कार में एक बार खुद ही स्वीकार किया था कि ये जहाँ रहता है बस वहाँ पर अमन और शांति बनी रहे, बाकी जनता भाड़ में जाए। जब अपना काम बने तो बने, दूसरे का काम बिगड़े तो बिगड़े। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यह एक संगठन चलाता है और उस संगठन का नाम है ओपन सोसाइटी। और इस संगठन का काम ही है देशों के बारे में अफवाह फैलाना। अफवाह फैलाकर फिर वहाँ से वो पैसे कमाते हैं। हमारे विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद जी ने भी इसको मानवता के लिए खतरा बताया है। धन्यवाद। Dr. Jashangi, a lot of your commentary was focused on democracy and furthering democracy and different forms of democracy. There are occasional comments that we see on the undermining of democracy in India, most recently in the context of the BBC, and just yesterday at the Munich Security Conference, George Soros spoke on many issues, but specifically on open and closed societies, and called on institutional reform in India. How do you, as Foreign Minister of India, explain this when you're dealing with your Quad ministers in particular, as well as others? Well, look, I actually made 2 points. One, how the world is changing. It is rebalancing. It is less Euro-Atlantic. I don't think everybody gets that. I think old habits die hard. I mean, very candidly, there are still people in the world who believe that their definition, their preferences, their views must override everything else. So, since you mentioned this specific example, I don't know how familiar people are with what was said at the Munich conference. Essentially, Mr. Soros said India is a democratic country, but he doesn't think the Prime Minister of India is a Democrat. By the way, a few years ago, in the same conference, I was there at that time, he actually accused us of planning to strip millions of Muslims of their citizenship, which of course didn't happen. It was a ridiculous suggestion. But you have to understand what this actually means. I could take a view that the individual in question, Mr. Soros, is a old, rich, opinionated person sitting in New York who still thinks that his views
should determine how the entire world works. Now, if I could only stop at old, rich and opinionated, I would put it away. But his old, rich, opinionated